Hi, welcome back. So, today I would like to advise you if you are going to watch this Telugu movie called Peddi, I just want to warn you that you might just waste your time because I already did that. So, I'm here to save you from that crap. If I have to summarize my experience, it would just be come on, guys, it's 2026. Grow a spine to show a society. I doubt if actresses now genuinely work in movies for their passion or it's just to stay relevant, cause controversy. It's just about male gaze which they want to cater because females are not even the audience. I know movies are meant to attract masses, keep them hooked to stories, but it doesn't mean that we have to lower our standards like this movie did. So, spoiler alert, I will discuss its plot. So, continue on your own terms. This movie is 189-minute scattered sports action drama, showcasing such impractical moves like backing up with no logic, funny enough to chuckle some laugh. Hear me out. The storyline is good, if and only if the execution was also that gripping. It loses its soul as the movie progresses. The story revolves around a remote village where caste discrimination is still prevalent. No connectivity to urban areas, no access to clean water or health care, and residents have no voting rights. Then we are introduced with our hero called Peddi, character played by Ramcharan. He is playing a role of young man working in a jaggery factory. He plays cricket as replacement with exceptional skills. An elder named Apala Suri has spent 30 years desperately knocking on government doors to get the village recognized. Social inequalities are rising. Petty decides to fight as a rural wrestler due to circumstances. Then he gets a career threatening leg injury, but he defies the pain and wins the tournament semi final before collapsing. Doctors reveal that his damage is permanent and now he can never do wrestling again. He refuses a standard government job. He amputates his own damaged leg and adapts to running blade prosthetic and undergoes a punishing physical transformation to become a para athlete. He gets qualified for nationals. He wins the national championship in finale. In post match victory, he exposes the central government's neglect, detailing the horrific condition and lack of identity his own people face. This was broadcast and it triggered the public outrage and immense political pressure. The film concludes with government finally signing to recognize the village and commission its first ever railway station. Wow, this is the whole story. Sounds good, right? But in between, they have introduced a character, Akshiyamma, played by Janvi Kapoor. She is the daughter of local minister, but the way she is portrayed here, it's absolute utter disgust and hard to find any purpose. I feel makers just took inspiration from Bhojpuri industry, or it's their shitty fantasy to cater men who rule over women's body. It's so sad to see that even today, in movies starring actors like Ram Charan, having a quite dedicated fan base, showcases staring, non consensual touch, obsessing over waist, and those dupatta shots with dialogues like बिना चखे ही मर जाएगा क्या are considered normal. जब सिनेमा में समाज के मुद्दों के बारे में मूवी बनती है तो वैसे भी कंडीशंस उसमें काफी बेटर होती है. हीरो अकेला ही सब कुछ हैंडल करता है, पूरे समाज को जस्टिस दिलाता है. देन कंडीशंस कैसी भी हों, दे विल मेक श्योर दैट ही कम्स ओवर इट एंड विंस एंड ही इज इनविंसिबल. देन क्या डायरेक्टर्स ये भूल जाते हैं कि असली समाज उससे काफी गुना पीछे है. हाँ, वो मुद्दे सच हैं जिसके लिए वो हीरो लड़ रहा है, पर लव इंटरेस्ट का ऐसा रोल प्ले करना वेयर मेन आर जस्ट लस्टिंग ओवर, इट्स वेरी इनएप्रोप्रिएट. लेकिन उसमें भी ट्विस्ट डाल देना कि हीरो इज फ्रॉम लोअर कास्ट, शी बिलोंग्स टू अपर कास्ट एंड डॉटर ऑफ मिनिस्टर, हाउ कैन शी फॉल फॉर हिम. सही बात है,
अगर हरकतें ऐसी हों, every girl will share the same thought. And then, when he invades her personal space, ignores her consent, then suddenly that accidental kiss happens. Now, अभी क्या होगा? लड़की को बोला जाता है कि अपनी इज्जत अपने हाथों और लड़का तो चला गया. No one will question him and hold him accountable. Now the concern is if anyone will get to know what just happened, तो लोग क्या कहेंगे? So you should just move on like a bad dream. And she is a daughter of some authoritarian figure. I'm impressed by the storyline. Who is writing the dialogues? मतलब खून आ जाए कानों से. Then we have the campaign sequence, जहाँ Akshayamma is preparing for campaign for his father, but his opponent is threatened by it. So the next move naturally could be he prepares and strategizes for something better so that voters are on his side. But no, that's not what happens. He and his people decided to cut her skirt while she is on stage and publicly humiliate her. क्योंकि पूरे परिवार की इज्जत तो लड़की है. If he is successful in his master plan, he will win the elections. मतलब क्या गिरा हुआ प्लान है भाई. मतलब पाताल लोक से भी कितना नीचे गिरना चाहते हो. अभी तो लेवल भी इतना नीचे गिर चुका है ना कि उठाना मुश्किल हो जाए क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंस हो चुका है. बट but the hero comes who intervenes at the last second. Just before her skirt falls, he cuts the tent rope. मतलब तालियां बजनी चाहिए हीरो के लिए. देन वही फाइट सीक्वेंस जहां पता नहीं कौन कहां से किसको मार रहा है पर हीरो सबको मार रहा है. देन फिल्म में जब अक्षयम्मा पेटी को कन्फ्रंट करती है दैट हाउ कैन ही टच हर विदाउट हर कंसेंट. एटलीस्ट मैंने सोचा था शायद अब समाज को आईना दिखाया जाएगा और कंसेंट के बारे में बात होगी. नो, बट दे चूज फेल द अदर जेंडर. पेटी गोस लाइक दूसरे लोगों का प्यार का इजहार करना थोड़ा अलग होगा. वो फूल लाते हैं, लेटर लिखते हैं, मगर मैं अलग हूँ. मैं बस उनकी मर्जी के बिना उनको टच करता हूँ. और फिर अक्षय अम्मा को रियलाइज होता है कि उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो चुका है एंड शी किसेस हिम. भाई मतलब क्या ब्रेन रॉट लिखा है. क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हो. कम से कम फूल लाना, लेटर लिखना सभ्य तरीके तो है. हर चूजिंग टू किस हिम जस्ट शोज जिस चीज के लिए उसने पेटी को कन्फ्रंट किया था इट्स नॉट अ बिग डील. वो तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो पेटी भाई का स्टाइल है कोट अनकोट प्यार करने का. किधर है वो पॉलिटिशियन बाप. अभी अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर रहा. अगर एज एन ओपोनेंट तुम्हें जेलेसी है कि सामने वाला इलेक्शन में जीत ना जाए, यू कैन डू अ लॉट ऑफ बेटर थिंग्स. हमारे रियल लाइफ इलेक्शन से ही इंस्पायर हो जाते. फ्री की रेवड़ी बंटवा देते. कम से कम वोट तो आ जाते ना. लड़की के स्कर्ट पर वाई डिड यू डिसाइडेड टू अटैक बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर एंड हर डिग्निटी. अगर समाज में कुरीतियां हटानी है तो दोनों जेंडर को साथ में लेके चलना पड़ेगा ना. कि ऐसा होता है कि एक का डेवलपमेंट हो और दूसरा आंख मूंद कर बैठा रहे. मतलब कौन सा समाज बिल्ड कर रहे हैं हम. ऐसा रिप्रेजेंटेशन के बाद जहां पर स्टेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा महिला समाज वैसे ही परेशान है. वी आर कंसर्न अबाउट आवर ओन सेफ्टी इवन इन द डे लाइट. उसको इतना नॉर्मलाइज क्यों करना. फिर उन्हीं मर्दों को वैलिडेट कर देना कि उनकी नजरों में खोट थोड़ी है, लड़की के कपड़ों में है. भगवान कसम घर के छोटे से छोटे काम के लिए भी घर के बाहर जाओ तो यू आर नॉट अलोन क्योंकि घूरती हुई आंखें जो हैं तुम्हारे साथ. इस फिल्म की स्टोरी लाइन शायद किसी को याद ना रहे, स्पोर्ट्स के बारे में याद रहे ना रहे, उस गांव के बारे में ना याद रहे जिसे उसकी फर्स्ट रेलवे स्टेशन मिला हो. पर लोगों को ना अपनी सहूलियत के हिसाब से इस मूवी की वो चीजें याद रहेंगी जो उनके हिसाब से सही है. बिकॉज इट नेवर चैलेंजेस देयर ईगो, नेवर मेक देम क्वेश्चन अबाउट देयर एक्शन. और दूसरे जेंडर का घर से बाहर निकलना और मुश्किल कर दो. मतलब हरकतें ऐसे करके तभी तो होगा रियल डेवलपमेंट. सीरियसली दिस इज द एंड. मेरा दिमाग वैसे भी खराब हो चुका है. इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच दिस प्लीज गो अहेड. Maybe I'll go and watch something better to cleanse my soul now. Most interesting thing, what I think, is maybe they won't stop here. Maybe Ramcharan will use it for his image as a savior when he chooses to retire and enter into politics. Same as Thalapati did. God knows, just an assumption. Anyways, tell me your thoughts in comment section if you watched the movie. And I will meet you in next one. Bye bye.